Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business, and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2331 4444, 23421050, and our third dedicated line is 2331 0464. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद रंगा। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और आप सभी श्रोताओं का हम आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज सोमवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइंस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं एस रंगाबाशियम। Thank you, Sparsh. The top stories. Prime Minister Narendra Modi and the President of the Government of Spain, Pedro Sanchez, launched manufacturing facility for the C-295 aircraft in Vadodara today. Prime Minister lays foundation of multiple projects worth nearly 5,000 crore rupees at Amreli in Gujarat. Domestic benchmark indices rebound after falling for 5 straight sessions. Sensex climbs over 600 points, while the Nifty settles about 24,300 points. And crude oil prices tumble today. Brent crude and WTI plunge over 5%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष पेड्रो सांचेज ने आज गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अमरेली में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक में 5 दिनों से चल रहा गिरावट का सिलसिला थमा और आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 600 अंक से अधिक चढ़ा और निफ्टी 24,300 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट क्रूड और WTI 5% से अधिक गिरे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष पेड्रो सांचेज ने आज गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया। ये भारत में सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वैश्विक वैमानिकी विनिर्माण में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री न सिर्फ भारत स्पेन के संबंधों को सशक्त बनाएगी, बल्कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी बल देगी। रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व के लिए यात्री विमानों का विनिर्माण करेगा और भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र की इसमें एक बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडोदरा की नई सुविधा देश में युवाओं को कौशल और प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस खबर पर चर्चा करने से पहले हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं पंकज। पंकज जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछें। हेलो जी, नमस्ते। जी नमस्कार। हमारा प्रश्न यह है कि अभी जैसे स्टॉक काफी प्राइस गिर रही है, तो
हमने कुछ स्टॉक ले रखा है अलग अलग शेयर कंपनी के। तो ये क्या इस समय मैंने मैं जिस प्राइस में खरीदा था उससे काफी नीचे भी प्राइस आ चुकी है, तो क्या अभी मैं फिर से इसमें एवरेज कर सकता हूँ या फिर ये मार्केट और गिर सकती है? धन्यवाद। देखिए, मेरे हिसाब से आपके लिए एक एवरेजिंग यानी कि औसत करने का एक अच्छा मौका, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपकी खरीद कीमत है वो कम हो जाती है। तो अभी जो गिरावट आई है उसने आपको एक मौका भी दिया है। आज के आप जो बढ़त है उसको अगर आप अभी छोड़ दे तो भी ये काफी अभी नीचे ही है। दूसरा, आगे की स्थिति जो है वो दो बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला तो जो खाड़ी के देशों के बीच की जो स्थिति है, खासतौर पे इजराइल और ईरान के बीच में, वहां पर क्या संभावनाएं या क्या आशंका बनती है, वो शेयर बाजार के लिए अच्छी या बुरी खबर लाएगी। और दूसरी बात, अमेरिका में देखिए कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े भी थोड़ी बेहतरी की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अमेरिका में चुनाव होने वाला है, यदि उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी अगर जीत होती है, जो कि पहले लग रहा था कि शायद न हो पाए, तो वो एक आपके लिए बाजार की दशा दिशा तय करने में काफी बड़ी भूमिका अदा करेगा। तो अभी के समय में अगर मैं कहूं तो बाजार के लिए कई तरह की जो है वो अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है। लेकिन ये दो तीन फैक्टर जो है, खासतौर पे मैं अगर खाड़ी के देश की बात करूं, वो एक थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जो एग्रेशन था, जो एक आक्रामकता थी, उसमें थोड़ी कमी आई है। तो अगले कुछ दिनों तक बाजार में जो है वो आप देखेंगे कि 2 दिन बाजार चढ़ा, 2 दिन बाजार उतरा। आपके लिए एक सलाह यही होगी कि जब कभी भी बाजार गिरे, एवरेज करने में हिचकी नहीं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, थोड़े थोड़े किस्सों में आप एवरेज कर लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। And before we take more phone calls, let's take a look at some of the other news items that we are tracking for you this evening. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone of projects worth around 4,800 crore rupees at Amreli in Gujarat today. Addressing the gathering, the Prime Minister said that projects launched today will significantly benefit the citizens of Saurashtra, Kutch, Junagadh, Porbandar and Botad districts of the state. Among the major projects inaugurated today are the gauge conversion of the 101 kilometer long Bhuj-Nalia rail line, 4-laning of various sections of the National Highway NH 151, NH 151A and NH 51, and various developmental projects worth over 700 crore rupees from the Water Supply Department of Amreli district, including the Navda to Chawand bulk pipeline. And let's take our next caller. We have Kush joining us from Raigad. Good evening, Kush, and welcome to the program. जी गुड इवनिंग सर, मैं कुछ बोल रहा हूँ जी सर। मेरा सवाल ये है कि कई बार कंपनी का अच्छे नतीजे होने के बाद भी स्टॉक का प्राइस क्यों गिर जाता है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इंट्राडे के लिए कुछ टिप्स बता दें। हाँ, देखिए, दूसरे वाले सवाल का शायद मेरे पास बहुत ज्यादा आपके पास टिप नहीं होगा, और वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। उसके लिए बेहतर है कि जो कारोबारी खबरों के चैनल्स हैं वो आपके लिए ज्यादा मददगार साबित होंगे। आपका जो पहला प्रश्न है कि कंपनी के नतीजे अच्छे होते हैं लेकिन कंपनी के शेयरों के भाव टूट जाते हैं, क्या वजह है? 2 कारण है। देखिए, बाजार जो हो चुका है उसको डिस्काउंट कर देता है, यानी कि जो आपके नतीजे आ चुके हैं वो कहता अब तो हो गया, कहानी खत्म है, आगे क्या होगा। यानी कि अगर अनुमानों में कहीं कोई ऐसी कमी की बात दिख रही है, वो उसके शेयर को गिराती है। दूसरा यह है कि कई बार कुछ कंपनी के लिए जो है वो अपने, जब वो एनालिस्ट कॉल करते हैं या जब नतीजों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसमें कुछ अपने रिस्क फैक्टर की भी जानकारी देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बाजार उसको लेता है। तो अच्छे नतीजे इस बात की गारंटी नहीं कि शेयर चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। अच्छे नतीजों के साथ साथ अनुमान क्या दिया जा रहा है वो भी शेयर की दशा दिशा तय करते हैं। शिशिर जी, जैसा कुछ ने अभी पूछा था और आपकी अक्सर सलाह रहती है कि इंट्राडे से दूर रहे, और सेबी भी इस बात को लगातार बता रहा है। चाहे आप अपना ब्रोकिंग अकाउंट भी जब खोलते हैं तो वो एक आपको बताता है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं इंट्राडे में। तो आपकी सलाह क्या है कि बिल्कुल इसको ना करें, स्पेशली रिटेल निवेशक? देखिए, आपको यह तय करना है कि आप एक निवेशक हैं या कारोबारी हैं। जी, पहले तो आप ये तय कर लीजिए। अगर आप कारोबारी हैं तो जाहिर सी बात है इंट्राडे ट्रेडिंग आप आसानी से करते हैं, वहां पे आपके लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने नहीं रखती। वहां पर क्षणिक जो चीजें होती हैं, एक ऐसी घटना घटी या पता चला कि यूरोप के शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले, तो फिर आपकी जो रणनीति है वो बदलनी पड़ती है। कल रात अमेरिकी बाजारों में बहुत तेजी थी तो आपकी सुबह की रणनीति खरीदने की थी, फिर बाद में आपने देखा यूरोप के बाजार गिरे तो फिर आपकी
रणनीति बदल गई। तो ये सारी चीजें एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए यानी कि कारोबारी के नजरिए से बदलती रहती है। जहां तक सवाल निवेशक का है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप छोटे निवेशक हैं, अगर आपके पास जोखिम लेने की क्षमता जो है वो एक सीमित है और आप एक सोचते हैं कि आप एक निश्चित समय के लिए आप करें, तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि आपको कितने समय के लिए बाजार में निवेश करना है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए। दूसरा, कभी भी भेड़चाल पे ना चलें कि उसने ये कमाया है तो हमें भी कमाई होगी, ये जरूरी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि राकेश झुनझुनवाला एक ही हुए थे, हर कोई राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकते हैं। तीसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कंपनी को जरूर पढ़िए। अगर आपका पैसा है और आप अपने पैसे के लिए कंपनी को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। So research is very important. Research is very important because it is your money. Ultimately, you are going to earn or you are going to lose, and that all depends upon how you read that. And even just 2 to 3 basic things: what is the top line, what is the bottom line, what kind of growth trajectory is there, what kind of growth chart is showing. If there is unexpected movement, either in top line or in the bottom line, you should avoid that. If there is a gradual growth or gradual decline in the thing, then you can make a plan about the company. That's right. Well, let's move on and take our next caller. We have O.P. Sharma joining us from Delhi. Good evening, Mr. Sharma. And what's it that you'd like to talk about? Good evening, sir. Good evening. Go ahead. Sir, as I am getting retired, I'm going to retire in the month of January 25. So I want to know about my retirement, after retirement investment plan, where I have to invest. Okay. Are you in the government sector or in the private sector? Private sector. Okay, sir. Yes, Shashi. Sir, the better would be that if you are retiring in the month of January, the best return you would get from any deposit scheme is a post office senior citizen scheme, which you can open either in the post office or you can go to bank. So banks have 2 senior citizen scheme, one which is operated by the bank itself, and the other one which is operated by the Government of India under the Post Office Small Savings Scheme. So you opt for the Post Office Small Savings Scheme, so you can put your money up to rupees 30 lakh in that particular scheme. Then you can also think about putting money in asset like gold. I mean, because the gold is something which is called as a ready cash. And please do not buy jewelry. If you want to invest in gold, buy bullion. Or rather, if you want to take some risk, not very high risk, then you can go for the gold ETF. That is another option. Since we do not know whether there will be another tranche of sovereign gold bond or not, so we cannot say anything about that. Had there been any announcement on that, I would have advised for that. Okay. So if there any kind of any sovereign gold bond issue is coming, put a part of that. And you can put 5% or 10% maximum in the equity, but do not exceed more than 20%, 10%, because you are already at the age of 60. So you need money because you are entering into the phase where your revenue is low and your expenditure may be higher. So keep some money in the liquid form rather than putting somewhere where the risk is very high. Yeah. And Shishir, before we go on and take some more phone calls, let's very quickly, discuss our first headline story where the Prime Minister launched the manufacturing facility for the military aircraft C-295 in Vadodara. And the highlight of this particular project is it's the final assembly line. That means a full, complete aircraft will be rolled out and will take to the skies in 2 years from now. Do you think, it will make an impact on the manufacture of civilian aircrafts as well in times to come? Certainly, and if you can remember that 1 or 2 particular component of civilian aircraft is already being manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited and some of the private sector companies. So these companies are already in that kind of situation where they are providing for the civilian aircraft. Now, the important thing is that when we are going to have the similar kind of final assembly line for civilian aircraft, just like what we have for the military aircraft. And if this kind of situation continues, I believe in next 3 to 5 years, we will have the final assembly line for the civilian aircraft also. Because for companies like, say, Airbus or Boeing, the cost of assembling here would be cheaper than what they are spending in some other countries because of the cheap labor force. So that is one advantage which they are looking for, and the kind of demand. I mean, if you can remember, all the airlines companies have placed the demand. Yeah. Whether you talk about one airline or the another airline, they all have placed the demand. Yeah. So demand is there. Airline companies are
ordering more and more aircraft. So rather than coming from say France or coming from US, if your final assembly line is here, the cost will come down, and that is going to help. But Shishir, I want to bring in this point, as you said, maybe some of the companies are into avionics, manufacturing navigation equipment, or even some of the interiors of the aircraft are being manufactured in our country. But as far as engines are concerned, aircraft engines, all the biggies, whether it's Rolls-Royce or GE or Pratt and Whitney and others, they haven't come up to our country into a joint venture to set up a manufacturing base. Do you think that's high tech? Yeah, because that's a very, very specialized product, and that's a USP. If you talk about Rolls-Royce, or if you talk about Pratt and Whitney, or if you talk about GE, every company has its own way of designing the engine. They don't want that should come in the open. Okay. So they have a limited facility there, and from there they are supplying. They don't want to, make something very public and so that anyone can just do something. जी, और दिल्ली से हमारे साथ सुजान जुड़ चुके हैं। सुजान जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछें अपना। सर, मार्केट मंत्रा टीम को गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग सर। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं सर। जी, पूछिए सर। पहला सवाल तो यह है, मैं एक्सपर्ट से जानना चाहता हूं सर कि जब हम जब किसी चीज के दाम बढ़ते हैं तो उससे ये मार्केट उतरने चढ़ने के ये अकॉर्डिंग होता है सर। जैसे किसी भी चीज के जो दाम रेट प्राइसेस में इंक्रीजमेंट होती है या डिक्रीज होते हैं किसी चीज के, तो वो मार्केट के गिरने या अप डाउन होने से होता है सर। ये कुछ नहीं, ये तो नहीं होता ना। मेरे ख्याल से जो आपका प्रश्न होना चाहिए था, हो सकता है शायद आप उसकी फ्रेमिंग और दूसरे तरीके से करना चाहते थे। मुझे लगता है कि प्रश्न आपका यह है कि किसी भी चीज के दाम के गिरने या चढ़ने के ऊपर सबसे बड़े कारण क्या होते हैं, और उसमें जो उनका प्रश्न, जो उसका दूसरा हिस्सा था कि क्या उससे कंपनियों के शेयर के ऊपर जो असर जो है वो पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और क्या ये भी होता है कि कंपनी के शेयरों के भाव गिर गए तो उसका भी असर क्या होगा, तो वाइस वर्सा काइंड ऑफ। मुझे लगता है कि शायद उनका क्वेश्चन का फ्रेमिंग कुछ इसी तरीके का था। देखिए, बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है, बाजार मांग और आपूर्ति पे चलता है। अर्थशास्त्र का जो मूल सिद्धांत है ना, वो यही है, डिमांड और सप्लाई। मांग आपकी ज्यादा होगी, चीजों के दाम बढ़ेंगे। आपूर्ति अगर कम होगी तो चीजों के दाम कब बढ़ेंगे। अगर आपूर्ति बहुत ज्यादा होगी तो चीजों के दाम घट जाएंगे, और उससे कंपनी के ऊपर भी असर पड़ता है। आप देखिए कि एक समय में बाजार में एक खास तरह के सामान बनाने के लिए 2 ही कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि उनका सप्लाई पे एक तरीके से हम कहते हैं कि डुओपॉली है। लेकिन जब बाजार में 5 कंपनी हो जाए, 7 कंपनी हो जाए, तो उससे उनका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में शेयर बाजार में जो कुछ भी चाल चलता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी के बिक्री पे क्या असर पड़ा है, कंपनी के मुनाफे पे क्या असर पड़ा है, वो उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। लेकिन क्या इसका उल्टा अगर मैं कहूं कि शेयर के भाव गिर गए, इससे सामान या वो जो सामान बना रही है उसके भाव गिरेंगे, मुझे लगता है शायद इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। राइट, लेट्स मूव ऑन एंड गो अक्रॉस टू मुंबई फ्रॉम वेयर वी हैव अमजद जॉइनिंग अस ऑन मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। गुड इवनिंग सर। या, गो अहेड, पुट योर क्वेश्चन। अमजद अहमद, मुंबई से। यस, गो अहेड। कभी मैंने शेयर मार्केट में आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है, एंड मैं ये चाहता हूँ कि इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट कंपनी जिसके लिए सिक्योर होती है या प्राइवेट कंपनी सिक्योर होती है। धन्यवाद। ओके, अमजद साहब, अगर आप शेयर बाजार में आना चाहते तो सबसे पहला तो काम करिएगा, एक डीमेट अकाउंट खुलवाइएगा, क्योंकि डीमेट अकाउंट के बगैर आप शेयर बाजार में आ नहीं सकते हैं। और ये डीमेट अकाउंट जहां पे जिस बैंक में आपका खाता है, वहां पे अमूमन सभी बैंक जो है वो डीमेट अकाउंट की भी फैसिलिटी करा रहे हैं। डीमेट अकाउंट एक तरीके से बैंक खाते की तरह ही होता है, उससे अलग कुछ नहीं होता है। दूसरी बात कि सरकारी बनाम निजी कंपनी, इसमें देखिए ये क्या होता है कि बाजार में एक धारणा बनी हुई कि ये सरकारी कंपनी है तो उसके भाव को लेकर के बहुत ज्यादा हम उसमें तेजी नहीं देखते हैं, जबकि उसी क्षेत्र की निजी कंपनी में हम भाव में तेजी देखते हैं। तो एक परसेप्शन की बात है, लेकिन बुनियादी तौर पे देखा जाए तो कई सरकारी कंपनियां बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और पिछले अगर 3 से 6 महीने में देखें तो शेयर बाजार में जो तेजी आई उसमें सबसे बड़ा योगदान सरकारी कंपनियों का रहा। तो मुझे लगता है कि आप अपने पास, अगर मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपए है, तो उसको आप एलोकेट कर लें। एक हिस्सा आप सरकारी कंपनी में डालें, एक हिस्सा आप निजी कंपनी में डालें। क्षेत्र विशेष की अगर मैं बात करूं, जस्ट आपको एक छोटी सी सलाह ये भी दे दूं, जो आपने पूछा नहीं फिर भी हम दे रहे हैं, कि अगर इस समय के सेक्टर की स्पेसिफिक की बात करें तो जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है वो उसमें काफी अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। वहां पे आप अगर
पैसा रखते हैं तो वो शायद आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on Akashvani. And as you know, this is an interactive program. You can put all your queries, questions and doubts to our expert in the studio. For that, you just need to pick up the phone and put your question. Our phone numbers, just to remind once again, are 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. And before we take more phone calls, let's take a look at some of the other news items that are coming in. The Finance Ministry's monthly economic review for the month of September highlighted that rural demand continued to strengthen in the first half of the current financial year. The report said that the rise in rural demand was supported by above normal monsoon, boosting Kharif sowing, and increase in minimum support price or MSP for Kharif crops, and government initiatives including increased allocation under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. So really good news coming in, Shishir. What would you say? We have always said that, our rural demand is the kind of a backbone. Certainly, and if the rural demand is picking up, that is going to add to what our projection is between 6.5 to 7%. That will be, or even it could exceed 7%. IMF in its latest report has talked about 7.2%, 7% growth rate. So that is something we can expect 7% or 7% plus. जी, कोलकाता का रुख करते हैं. अतानु शाह हमारे साथ जुड़े हैं. अतानु जी, स्वागत है आपका शो में. प्लीज सवाल पूछें. हाँ, गुड इवनिंग सर. माय क्वेश्चन इज one of my savings bank account pushing me to its savings bank account rather than my fixed deposit account, because already I have a fixed deposit account savings bank. So they are pushing me because and it is overthrown by systematic way. They are approaching me because their savings account. There was problem in the phone line. Yeah, I couldn't get his voice, but I think he was talking about saving account and the fixed deposit. Of course, the saving account will give you lesser interest in terms of fixed deposit, but your money will be locked in for longer period. और अब नजर डाल लेते हैं आज के बाजार पर. घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 5 दिनों से चल रहा गिरावट का सिलसिला थमा और घरेलू सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 603 अंक की तेजी के साथ 80,005 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 158 अंक की मजबूती के साथ 24,339 पर रहा. As Sparsh just mentioned, the domestic benchmark indices today ended on a positive note, snapping their 5-day losing streak. The BSE Sensex jumped 603 points to close at 80,005. While the NSE Nifty advanced 158 points to close at 24,339. The broader market at the Bombay Stock Exchange ended with gains. The mid-cap index added over 0.5% and the small-cap index rose more than 1%. In the Sensex pack, 24 out of 30 companies ended in the positive terrain. In the top gainers, ICICI Bank climbed nearly 3%, Adani Ports gained 2.8% and JSW Steel added more than 2.5%. Conversely, in the laggards, Axis Bank shed 1.4%, Kotak Mahindra Bank lost 1% and Tech Mahindra fell 0.7%. In sectoral indices, 17 out of 20 sectors logged gains. In the top gainers were commodities, which added over 1.7%, realty increasing by 1.4% and telecommunication and healthcare both gaining 1.3%. Among the laggard sectors were energy and capital goods, which went down by nearly 0.3%. Shishir, to talk about the stock markets, what would you say, from close to 86,000 points as far as the Sensex is concerned now, coming down to 80,000 and below, and, today some gain? So I think it's a buying opportunity. I mean, if the market is down, it's giving you buying opportunity. So when the Shubh Sambat, new next Sambat is starting from the Deepavali day, it's giving you buying opportunity. बिल्कुल. और रुपए पे नजर डाल लेते हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 84 रुपए और 7 पैसे के स्तर पर दर्ज किया गया. डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 104.21 के स्तर पर था. मुंबई से हमारे साथ जी and take some more phone calls. We have Hasmukh joining us from Mumbai. Good evening. Good evening, Market Mantra. Yeah, go ahead, put your question. My question is that now since the second quarter results are out,
inflation is under control. The world central banks are reducing interest rates, and also the demand basically is somewhat, got dampened because of not reduction in the interest rate by our RBI. What do you think? Is it? I think the RBI is going to bite the bullet, going to reduce the interest rate very soon, at least if not now in December. Thank you. I personally believe, sir, the interest rate change, the policy interest rate change may take place slightly in the month of, say, in February only, when the last policy review of current fiscal policy would take place. Because the inflation, you mentioned it is under control. Of course, it is below 6%, but still the inflationary expectation is slightly on a higher end. And also, please do not forget that the food prices are giving some kind of headache to the inflation managers. So I believe that RBI would wait for one more policy review and then they may go for any kind of revision. जी, आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। 5 प्रमुख सूचकांकों में से 4 आज बढ़त के साथ बंद हुए। जापान का निकेई 1.5% से अधिक बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% से अधिक की तेजी दिखाई दी। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट 0.5% से अधिक के फायदे में रहा और हांगकांग का हैंगसेंग 0.04% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.2% से अधिक की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं यूरोपीय शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुत्सी 0.3% गिरा और जर्मनी का डैक्स 0.2% से अधिक के नुकसान में रहा। वहीं फ्रांस का कैक 0.04% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। And joining us next is Shankar from Bhopal. Good evening and welcome to the program. Good evening. So I have two questions. One is why all the capital gains with gold or equity, long-term equity or long-term gold or property is treated at par. Long-term capital gain shouldn't be separate because property, when one buys property, it is actually activating the economic activity in the country, so it should be charged tax less. Everyone needs house, whereas gold should be taxed at higher rate. So my question is why the government is not differentiating between different long-term assets, long-term capital gain tax on different assets. One. Yes. And second question, small question is how do you see public sector bank in near future? Okay. Coming to the second question first, the public sector bank, if you talk about the outlook, it appears to be very encouraging. If you see today, 3 banks have come out with the result and the results were really good and the expectation is also that it's going to pick up. Coming to your first question that why we are treating various assets under the same for the long-term capital gain. This was a question before the budget and that is why in the budget they have rationalized the entire structure and so we have almost a new structure for the capital gain thing. That's a government call to decide about that whether they can go for different kind of differential treatment for the gold or differential treatment for the real estate. But let me tell you, if you talk about the differential treatment for the gold, people who love gold, investing in gold would be very angry. Okay. And very briefly, oil prices slumped today after Israel's retaliatory strike on Iran did not target the OPEC members' oil and nuclear facilities, easing concerns about potential disruptions in crude supplies. Brent crude was trading at 5.7% down at $71.66 per barrel, while WTI tumbled over 6% to close at $67.40. सराफा बाजार में अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.37% गिरकर 78,490 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.25% गिरकर 97,280 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। शॉर्ट कमेंट शेषर जी आपका सोने को लेकर। देखिए, दीपावली का समय है, सोने को लेकर के जाहिर सी बात है काफी मन में सवाल होंगे। हैरानी हुई कि आज किसी ने सोने पर सवाल नहीं पूछा एक्सेप्ट कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को। मुझे लगता है कि सोने में अभी खरीदारी करने का समय नहीं। जी श्रोताओं, वक्त है चर्चा को यहीं विराम देने का। शिशिर जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर। Prime Minister Narendra Modi and the President of the Government of Spain, Pedro Sanchez, launched manufacturing facility for the C-295 aircraft in Vadodara today. Prime Minister lays foundation of multiple projects worth nearly 5,000 crore rupees at Amreli in Gujarat. Domestic benchmark indices rebound after falling for 5 straight sessions. Sensex climbs over 600 points while Nifty settles above 24,300 points. And crude oil prices tumble today
Brent crude and WTI plunge over 5%. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.